As you see in the video, yes, so yes. So sorry to interrupt, my dear. So yeah. Before we start, I would like to thank you all the participants to come and join with us and to motivate my student Dhriti Maurya. And believe me, she is having a very tremendous knowledge about the global warming. एंड हमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ी कि इसको प्रिसाइज करने में, क्योंकि उसको नॉलेज, रिद्धि को नॉलेज बहुत है ग्लोबल वार्मिंग के बारे में. एंड यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ग्लोबल वार्मिंग इन द क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन. हम लास्ट में क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन में हमने रखा है, तो वहां पर आपके क्वेश्चंस आप रेज कर सकते हैं. सो तब तक मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आपका माइक म्यूट रखना. एंड चैट बॉक्स अभी बंद है, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसको ओपन कर लेंगे फॉर द कन्वीनियंस ऑफ प्रॉपरली ये वेबिनार कंडक्ट हो इसलिए. एंड यस, नाउ I would like to invite Dhriti Maurya. Dhriti, अभी आपके हाथ में है पूरा वेबिनार एंड you can definitely have 100% control. मैं आपके साथ हूँ and you can start now, beta. All the best. yes, so greetings everyone. I'm Dhriti Maurya and I'm in grade 9. First of all, I would like to thank you all to be present here on the Sunday afternoon, taking your time out. Thank you very much. As we move on, I'm going to launch a poll that are you guys ready to know more about global warming? That is high time to prevent planet Earth's fever? Well, the options are yes and can't wait anymore. Such a nice response is sir. यस यस यस, एंड मैं चाहता हूँ कि हमने बहुत पोल नहीं रखे, बहुत ही कम पोल है. एंड पोल्स आर देयर इन अ वेबिनार और ऑनलाइन मीटिंग to interact with the speaker and to make 100% efficient and effective our webinar. So I request all of you, please participate in the poll, and we are getting a wonderful response by the way, Dhriti. Thank you so much participants for participating in polls, and we are going to stop this poll very soon. We will wait for a few more seconds to get a more response. By the way, wonderful response, and thank you so much participants. Yeah, are you ready to know more about high time to prevent planet Earth's fever? Options are yes and can't wait poll. We are going to end this poll now. 5, 4, 3, 2, 1. And here is the result on the screen, Dhriti. The results are amazing. 58% of you says yes, and 42% of you can't wait anymore. Well, this result is very amazing for me. Thanks for your precious time. So, not letting you wait more, let's move on. But before we move on, I want you all to imagine. So, please close your eyes and imagine. अपनी आंखें बंद कीजिए और इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां पर पेड़ पौधों की जगह प्लास्टिक और कचरा भरा पड़ा है. इतनी गंदगी, पैर रखने की जगह नहीं है, सांस लेने लायक हवा नहीं, और पानी की तो बात ही छोड़ो. बहुत भयंकर लगती है ना ये इमेजिनेशन, पर ये इमेजिनेशन सच भी हो सकती है अगर हम लोग हमारे रोजमर्रा की जिंदगी ऐसे ही बिताते रहे और हमारे नेचर का ध्यान नहीं दिया. So, as you move on to the next slide, that is, I want to ask you all a question. That have you ever asked yourself a question? How many days are left for extinction? For this, I am going to launch a poll. That is, have you ever asked yourself a question that how many days are left for extinction? The options are yes, no, and never thought about it. Well, such a quick responses, sir. Yes, wonderful response, and I really thank you to all participants for participating in the polls also and motivating the Dhriti Maurya. And results also are amazing, my dear.
So we are going to end this poll very quickly. We will wait for a few more seconds. And yes, people are responding. Thank you so much, participants. Once again, wonderful question. How have you ever asked yourself this question? How many days are left for extinction? So, my God, Didi, it's a very, very scary question. But by the way, I'm going to end this poll. Five, 4, three, 2, one. And results on the screen now, beta. yes, the results are here. 52% of you have asked this question to yourself. That's great. And 10% of you are saying no. 39% of you are saying never thought about it. Well, if you have done it and not also, now think about it and ask this question to yourself. आपको क्या लगता है? How many days are left for extinction of human race, of all the species or in our earth? Because जो हम लोग जानबूझ के या फिर ना ही जानबूझ के हमारे अर्थ के साथ कर रहे हैं, उसमें अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे तो एक दिन एक्सटिंक्शन का भी आएगा. तो हम लोग को पहले से ही फ्यूचर प्लान कर लेना चाहिए ना. नहीं, आपको नहीं लगता? वैसे ये क्वेश्चन आप खुद को पूछे और आप अपने व्यूज मुझे क्वेश्चन आंसर सेशन में बता सकते हैं. आई वुड लव टू लिसन दैट. So, as we move on, I want to tell you some facts about Earth. That is, first, scientists have studied that we have discovered approximately 87 lakh of species, and there are over approximately 1.6 lakh endangered species of them. Oh God, approximately 1.6 lakh endangered species, isn't it a huge amount? हम लोगों ने इन स्पीशीज के बारे में जान लिया, पर उनका ख्याल और ध्यान कौन रखने वाला है? इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है? इसके बारे में आप सोचिएगा. Let's move to the second point. That is, the river Ganga in India is considered as one of the most polluted river in the world. Most of all, इंडियाज में जो हिंदू समाज है वो गंगा रिवर को एक बहुत सेक्रेट रिवर मानता है. Let us take this apart. Ganga River has also contributed since many years by helping people in many ways. We all know that how rivers help us and are very important in our daily lives and very needful also. But in return, what have we given to this river? The river Ganga. It is one of the most polluted river in the world. Well, think about it. This is what we should give it in the return. Let's move on to the third point. India is predicted to see around an increase of death rates due to climate change. That is approximately 60 deaths per lakh population by the end of the century. Well, it is a fact that India is the second largest country in form of population, and 60 deaths per lakh population is a huge amount. Calculate it, isn't it? And recently there were so many disasters in India, and one of the factors that affected this was climate change. Think about it. Isn't it going to cause us a great threat? Well, let's move on to the fourth point. From 2002 to 2019, India has lost approximately 19% of its total tree cover. Well, India is a large country and losing approximately 90% of its total tree cover is a huge amount for us. And we are moving towards the loss. Think about it. पेड़ हम लोगों को कितनी हेल्प करते हैं हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में. अब आप ये सोचिए, अब हम लोग ने 19% ट्री कवर जो लूज कर दिया है, तो हमारे साथ क्या हो सकता है? सोचिएगा इसके बारे में. As we move on, I want to tell you, make you do one more imagination. So close your eyes for just 5 seconds. That is 1, 2, 3, 4, and 5. Wow!
such a beautiful picture, isn't it? This imagination is about a planet Earth and its beauty. So आप प्लीज डरिएगा मत कि मैं आपको फिर से कोई भयंकर इमेजिनेशन कराने जा रही हूँ. So अब आप इमेजिन कीजिए. What is your imagination about the beauty of our Earth? For me, it is full of magnificent mountains, beautiful large oceans, large variety of species, and they are so colorful and beautiful, and different types of cultures made by us humans. Isn't it a beautiful imagination? And it is a dream come true. हमारी पृथ्वी इतनी सुंदर भी है. अब जैसे हम आगे जाते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में ये चीज के बारे में बताना चाहती हूँ कि व्हाट हैव वी डन टू मदर अर्थ. इतनी सुंदर पृथ्वी को हमने क्या नुकसान पहुंचा दिया? वेल, लेट मी लिस्ट देम फॉर यू ऑल. That is deforestation, rising population, urbanization, forest fires, rising sea level, pollution, global warming, and not even one kind of pollution. There is a huge list of it, isn't it? And this list doesn't stops here. But आप ये सोचिए कि अगर इतनी बड़ी लिस्ट हम लोगों ने हमारे अर्थ को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए और सुंदर करने के लिए बनाई होती और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया होता, तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते. बट इट इज वेरी सैड फॉर मी कि हमको आज इस टॉपिक के बारे में बात करना पड़ रहा है, बिकॉज अब ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमन के लिए बहुत बड़ी थ्रेट बन रही है. कैसे, मैं आपको आगे समझाऊंगी. सो एज वी मूव ऑन, आई वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस ने कैसे अपने आप को ही इतना बुरी तरीके से अफेक्ट कर दिया? वेल, डू यू नो how many people lose their life each year due to air pollution? Well, air pollution is an aspect from the smoke hanging over in our surroundings. Air pollution affects climate change also. Well, over 4.2 million people lose their life approximately due to air pollution each year. Well, approximately 4.2 million. Isn't it a huge amount? एंड सोचिए कितने लोगों की जान चली जा रही है. बट आपने ये सोचा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ह्यूमंस भी इनमें से एक हैं जिन्होंने एयर पोल्यूशन को बनाया है और बढ़ाया है. वेल, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. दैट इज, डू यू नो children are over 10% of world's population and a huge percent of global burden of disease falls on these children. Well, बच्चे हमारे फ्यूचर होते हैं ना. और आप सोचिए, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज जब इन बच्चों के ऊपर पड़ता है तो प्रगति कैसे होगी? और इन 10% बच्चों में से जो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन में से निकलते हैं, उनमें से 40% बच्चे ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीज के अंदर आते हैं. ओ गॉड, देन वो प्रगति कैसे करेंगे अगर वो अभी ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के नीचे आ गए? लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट. दैट इज, डू यू नो, अकॉर्डिंग टू यूएन's latest reports, global temperature is going to rise by how many degrees in upcoming 5 years? Well, आप लोग सब सोचेंगे अब आपको एसी का बिल और ज्यादा भरना पड़ेगा. पर कीप दिस अपार्ट, इसके भी और ज्यादा डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं फ्यूचर में. अब अगर ऐसे ही ये टेम्परेचर राइज होता गया नेक्स्ट 5 इयर्स प्लस नेक्स्ट 5 इयर्स प्लस नेक्स्ट 5 इयर्स, ओ गॉड, तब एक दिन ऐसा आएगा कि टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि ह्यूमंस सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे. फ्यूचर जनरेशन का क्या होगा फिर? वेल, इट इज 1.5 degrees Celsius temperature is going to rise in upcoming 5 years. Well, let's go to the fourth point. Do you know that too much exposure of heat waves can cause heat exhaustion, heat strokes, and death as well? But do you know how many people lost their life because of heat waves? Well, from 1998
to 2017, approximately 1.66 lakh people have lost their life due to heat waves. और ये आंकड़ा अब धीरे धीरे बढ़ रहा है. And heat wave is going to cause one of the most devastating and treacherous form in our future. हीट वेव हमारे लिए एक थ्रेट है जिसका हमें ध्यान देना पड़ेगा. वेल, लेट्स मूव ऑन. और एज वी मूव ऑन, मैं आपको कुछ और ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी पिक्चर से समझाने के लिए कि हमने क्या कर दिया और अब आगे हमारा फ्यूचर कैसा होगा अगर ये फैक्ट्स सही हो जाते हैं. बट उससे पहले मैं मेरी स्मार्ट ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि मैंने यहाँ पे एक गलती की है, तो सर कैन यू प्लीज स्पॉट दैट मिस्टेक फॉर मी. बट उससे पहले मैं आपको बता दूं ये गलती मैंने जानबूझ के की है. सो सर कैन यू प्लीज स्पॉट दैट मिस्टेक फॉर मी एंड माय ऑडियंस. यस बेटा, ये मुझे लगता है कि या डेफिनेटली, एंड आई नो दैट वेरी वेल दैट यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट. सो आपने ये गलती नहीं है, लेकिन आई आई फील दैट पेन ऑल्सो. एंड ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये ग्लोबल वार्मिंग भी है और एज वेल एज ग्लोबल वार्निंग भी है. सो आई कैन सी दैट एन in replacement of M. Am I right? Yes, Yeah. you are right. Well, that is why I have written it as warning. If we don't take a global warming as a warning now, ये हमें वार्निंग लेने का चांस अब फ्यूचर में नहीं देगा. सो दिस इज द हाई टाइम टू टेक ग्लोबल वार्मिंग एज अ वार्निंग. So as you see in this picture is of ozone layer. Well, approximately 4.6 billion years ago, due to the formation of ozone layer, microorganisms could survive because ozone layer protects us from the harmful UV rays of sun. Ab, there is a huge depletion in ozone layer, and ये डिप्लीशन ओजोन लेयर की धीरे धीरे बढ़ रही है. और ये डिप्लीशन अब एंटार्क्टिका से अफ्रीका की तरफ भी बढ़ रही है. वेल, आप लोग को एक क्वेश्चन आएगा कि ये डिप्लीशन ओजोन होल में तो एंटार्क्टिका के पास है, तो हमें इससे क्या फर्क पड़ता है. बट ये गलत है, क्योंकि हमें इससे बहुत फर्क पड़ने वाला है. फ्यूचर बहुत ज्यादा रिस्क में है हमारा. कैसे, मैं आपको नेक्स्ट पिक्चर से बताती हूँ. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस इज पिक्चर ऑफ एंटार्क्टिका. वेल, एंटार्क्टिका की आइस शीट पहले के मुकाबले अब और ज्यादा मेल्ट हो रही है, एंड इसकी वजह से मैनी ऑफ द कंट्रीज के कोस्टल एरियाज ड्राउन और फ्लडेड हो सकते हैं. एंड अब हम सबको पता है फ्लड्स कितना बड़ा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म लेती है. और आपको एक और फैक्ट मैं बताऊंगी. आप सोचिएगा, there is approximately 91 volcanoes under the ice sheet of Antarctica. Well, 91 volcanoes? Is it true? Yes, it is. It is an approximation. There can be more, there can be less, and many of them are active also. So, जब ये आइस शीट डिप्लीट हो जाएगी, उसके बाद ये वॉल्केनोज आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज हो जाएंगे. There are more chances that due to chemical reaction ये volcanoes erupt हो जाए. और हम सबको पता है कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है जब एक volcano erupt होता है. And there is a whole chain here. So कितने टॉक्सिन्स और एयर पोल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में फैलेगा, आप सोचिए इसके बारे में. और एंटार्क्टिका के आसपास का रीजन would not be habitable for us. Well, अब ये हमारे ऊपर है which path we have to choose. As you see in the third picture, the path which is leading us to the destruction and threat, or the path which is leading us to live more and हमारे evolution का जो process है वो continue करने के लिए. Now this is on us and we have to take the decision right now, because this warning हम लोग को फिर से इसे वार्निंग लेने का चांस नहीं देगी. So मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में कुछ ऐसे टिप्स बताना चाहूंगी
जो हम लोगों को पोल्यूशन से ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प कर सकती है। एंड हम इनसे बच तो नहीं सकते, बट इसे कम कर सकते हैं। वेल, what what we can do, as you see in the next picture. Now, अब ये हम पे है कि हमें क्या चाहिए, solution या फिर pollution. Well, for this, I am going to launch a poll. That is, what do you want, solution or pollution? Well, I want solution because मुझे इतने threat और devastating form में रहने का बिल्कुल नहीं पसंद होगा। मुझे भी लगता है कि हम में से बहुत लोग solution ही चाहते होंगे। So, we are getting such a nice responses, isn't it? Yes, beta. Yes, beta. And thank you so much. Thank you so much from bottom of my heart for participating in this poll. And yeah, definitely, I can say that yes, I want a solution, not a pollution. In so many terms that affect the pollution in our day-to-day life, health and wealth, and so many things. But yes, results definitely for Dhriti is surprising. But we are going to end this poll now. 5, 4, 3, 2, 1. And here is the result on the screen, beta. yes. The results are here. Well, sir, can you please show the results again? Yeah. So now, yeah. Yeah, 97% of us want solution and 3% of us wants pollution. Well, there might be our chances that जल्दी में आप लोगों ने मिसक्लिक कर दिया हो. Well, मुझे तो ऐसा लगता है कि most of us want solution only. Well, let's move on. अब जैसे मैंने आपको पहले बोला, मैं आपको इस नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्यूशन के बारे में बताना चाहती हूँ. Well, as you see, transportation, housing, electricity, waste and industries are the factor which affects global warming, carbon emission. Well, हम कुछ easy steps लेके इसे कम कर सकते हैं. That is transportation. You can do carpooling. Simply आपके colleague को help करना. Nearby अगर आप दोनों रह रहे हैं and your destination is also the same. So you can choose alternate days with आप लोग एक दूसरे के transportation vehicles को use कर सकते हैं. Isn't it a simple way to reduce carbon emission and global warming? Housing. Well, smart designs for building houses can reduce carbon emission and global warming. Well, ये फैक्ट पे मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी, तो फिर मैंने एक आर्किटेक्ट को कांटेक्ट किया, दैट इज अ रिनाउंड आर्किटेक्ट ऑफ वडोदरा, मिस्टर सोहम शाह, एंड ही सजेस्टेड दैट डिजाइन्स ऑफ बिल्डिंग्स शुड बी लाइक दैट शुड यूज लेस mechanical devices for heating or cooling. Well, let me give you example for explanation. People use glass for in construction of buildings. Well, due to this, there is an increase of heat inside their houses and buildings. And because of this, ultimately, we have to use air conditioners to reduce the heat. Well, isn't it a waste? And it also ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो हम लोग को अफेक्ट कर रहा है. वेल, अगर आप कोई घर बनाना चाह रहे हैं या फिर कोई घर बनाना जा रहे हैं, तो आप प्लीज एक आर्किटेक्ट से कंसल्ट कीजिए. देन हाउ कैन योर हाउस एंड यू कैन डू समथिंग फॉर मेकिंग योर सराउंडिंग ग्रीन एंड हेल्दी, हैप्पियर and reducing your carbon footprint also. इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा पार्ट है, आप अपने सराउंडिंग में देखिए कितनी लाइट्स ऑन है. वेल, ये हम लोग ध्यान देते हैं या फिर नहीं देते.
But electricity हम लोग को waste नहीं करनी चाहिए, because most of the electricity in India is coming from fossil fuels and carbon, etc. Well, in electricity, we can switch to green electricity, or we can say green energy, like solar panels, wind wheels, water turbines, wave turbines, etc. And am very thankful to government that government has made so many plans to help you applying this green energy. Isn't it a simple way? And it is efficient also. Waste. We all know how to do waste. एंड सिंपली हम लोग को गवर्नमेंट को वेस्ट मैनेजमेंट का यूज करके कितना ज्यादा बड़ी हेल्प कर सकते हैं. ओनली टू यूज waste management can reduce carbon emission also. Well, it is a simple way. Industries and government are doing many plans and making many plans to reduce the carbon emission, and it is very nice and I'm thankful to them. But there is a little more work left, and industries can switch to green energy that will be money efficient and reduce carbon emission also. Isn't it helpful to us and them? Well, it is. As you see in the second picture, we can use more public transport, making our environment greener, green energy, and it helps to create a beautiful dream. It is a dream and it is a goal for us that how to make our city Vadodara, state Gujarat, country India into a greener place, cleaner place and energy efficient place. Well, by applying these simple tips, we can do this. And इनमें से कई टिप्स तो आप अभी के अभी अप्लाई कर सकते हैं, like transportation and waste and electricity. We can do at least one of them to help our environment and nature. So as you move on, आप जैसे इस next picture में देख रहे हैं, there is a she is Latika Nath. Well, she is one of my favorite wildlife conservationists and is being given the title of Tiger Princess by National Geographic and has done many works in conservation of tigers. Well, I am proud to introduce her to you all. Next is Romulus whitaker. Well, he is also a wildlife biologist, conservationist and hyperbiologist. Well, and Romulus whitaker is the founder of Madras Snake Park and has done many works in conservation of turtles, snakes, and in Hindi, what we say ghadial. Well, there are more than these heroes and heroines in our real life, but you can be one of them too by applying some simple techniques and tricks that can help reducing global warming and help saving our environment and nature. So, as we move on, as you see this, what can I, you, and we do? Well, plant. We can plant. मैंने आपको जैसे बताया, प्लांट्स हमको सिर्फ ऑक्सीजन देने के लिए ही नहीं, बहुत सारी चीजों में हेल्प करते हैं. एंड इट हमें प्लांट, हमारे लिए प्लांट लाइफ के है, क्योंकि प्लांट्स हमें लाइफ देते हैं directly or indirectly. Most of us and we all are dependent on plants, so we should plant more plants to make our environment greener. As you see, I have come up with an method or technique or a movement, we can say, as you see in this next slide, that is hashtag 1+1 green and grow. What is 1+1 here means? Here 1 means plant a tree or a sapling at your home or anywhere you want, take care of it, and +1 means you can give a plant or a tree to your beloveds, loved ones, relatives, neighbors, anyone you want. Well, by this, the chain will go on and
You can take your selfies by planting and by gifting this plants to your beloved like this. Well, and you can add this, don't forget to add this hashtag 1+1 green and grow. By doing this, by posting this into social media, it will encourage many more people to join this. And as the chain will go on, and it will help our environment very much. At least a little step that will make us proud that we have done something to save our environment. And please do inspire the person you are gifting the plant to take care of it and give one another plant to another person. Like this, the chain reaction will move on, and one day it can be one of the most viral chain reaction, and making this will make and affect our environment very much in a very positive way also. आई एम वेरी श्योर इन प्लांट्स को हम लोग हेल्दी हैप्पी ग्रो करते हुए जब देखते हैं ना, वो पॉजिटिव वाइब्स और पॉजिटिविटी बहुत अच्छी होती है, और वो हम लोग को ही नहीं हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, और हम लोग हमारे खुद का कार्बन फुटप्रिंट भी कम कर रहे हैं. वेल, यू कैन अप्लाई दिस मेथड. And please do post your pictures and selfies in social media by hashtag 1+1 green and grow. Well, as I move on, I want to thank you all to be here and participate and congratulate you because you are going to be one of the most proud heroes for yourself and in real life. एंड आप खुद के लिए इतनी खुशी होगी जब आप ऐसे प्लांट्स उगाएंगे. बट मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि ये सेशन अभी बंद नहीं हो रहा है. इट इज नॉट गोइंग टू एंड हियर. देयर इज अ क्वेश्चन आंसर सेशन लेफ्ट अहेड. बट बिफोर इट, I would thank you all, thank my teachers, my colleagues, my relatives, and everyone in my audience to be here and present here by helping our environment and motivating me, giving your blessings. Well, thank you very much. I thank you all from bottom of my heart. Thank you. So we have a question and answer section now, and before moving on to the question and answer section, I request all the participants to be with us and participating in question and answer section also. And before that, I would like to thank you, Dhriti Maurya, for choosing this wonderful topic for doing a webinar. And I also like to thank express my thanks to her parents also, Chandraprakash Maurya and Ila Maurya, for helping Dhriti Maurya in each day to make this webinar more and more effective and supporting her. And I also like to thank to all the lovely participants to take a time, spending a time for 1 hour and joining this webinar. And also like to thanks to Soham Sir.